രാജാക്കളെ നാഗയക്ഷിയമ്മേ എല്ലാരും വന്ന് അനുഗ്രഹം നൽകണേ. രാഹുദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആകണേ. നാഗരാജാവേ നീ തുണച്ചിടണേ. ആദിനാഥന അനന്തന്റെ പാദത്തെ വന്നിച്ചോ ഞാനിതാ കൈതൊഴുന്നേ. ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വാസാനും പിന്നെ അവരുടെ അനുയായികളും കൂടി വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയ കാരണം കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കേരളത്തില് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മേലാറ്റൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആണെന്നാണ് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ പുള്ളുവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. പുള്ളുവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പുള്ളുവ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും ഈ നാഗരാജാവിൻ്റെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അറിയാനുണ്ട്. അത് പണ്ട് കാലത്ത് നാഗഞ്ചേരി ഇല്ലത്തെ തമ്പുരാട്ടി നാഗമണി കിണറ്റിൽ നിന്ന് തണ്ണീരും കോരി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് കാണ്ടാർ വനത്തിനെ അഗ്നിയിരിഞ്ഞു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു നാഗത്തിനെ തീ പറ്റിയ സമയത്ത് ഓടി വിളിച്ചു. ഈ വിളിക്കാൻ സ്ഥലം കാണാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കല്ലാറ്റുന്നവർക്ക് തോന്നിയില്ല, എന്നെ ചുറ്റിക്കൊള്ളാമെന്ന് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും അപേക്ഷിച്ച് ആരും അവർ സംരക്ഷണം നൽകിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ നാഗഞ്ചേരി ഇല്ലത്തെ തമ്പുരാട്ടി നാഗമണി കിണറ്റിൽ തണ്ണീരും കോരി നിൽക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് ഈ സർപ്പം അവിടെ എത്തുകയാണ്. ഒട്ടേറെ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ കുടത്തിൽ കൊരിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നാഗം അതിൽ പൂക്കൊളിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ മേലെ ചുറ്റിയ ചുറ്റാട കൊണ്ട് കുടത്തിൻ്റെ വായ മൂടിക്കെട്ടി ഈ ഇല്ലത്തിൻ്റെ കൊടിമുല്ല തറക്കിൽ കൊണ്ടേ കവിഴ്ത്തി. അവിടുന്ന് കൈയെടുക്കുമ്പോൾ യന്ത്രകപ്പുറ്റു എന്നറിഞ്ഞില്ല, മന്ത്രകപ്പുറ്റു എന്നറിഞ്ഞില്ല, ഏണു കോണായി ചുറ്റായി ഉൾത്തിരിഞ്ഞു എന്നാണ്. അവിടെ ആ പുറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പേ അമ്മ ചോദിച്ചു, എന്താണ് മകളെ ഇതെന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം അവരോട് വീതിച്ചു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുണ്ടെന്ന് അവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ തീണ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു അശുദ്ധി കൽപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ ആ സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതാണ് ഈ അതിൽ ഈ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുടം അങ്ങനെയാണ് ഈ കുടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരാൻ. അങ്ങനെ എൻ്റെ പേരും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലും എന്നാൽ 96 മഹാവീരികൾ ഏക്കം നിൽക്കാം, അങ്ങനെ കുറേ ഇതുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം മാറി നിൽക്കാം എന്ന് 5:30 മണി നാകും ഈ ഒരു വരം കൊടുത്തു ഈ പുള്ളുത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ത്രീയാണ് പുള്ളുത്തി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവരുടെ പാതുകാപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നാഗഞ്ചേരി തറവാട്ടിലെ പിന്നെ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീ പുള്ളുവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അല്ല വരുന്നു. അപ്പം ഈ അശുദ്ധി, അതായത് ഇത്തരം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അമ്മ അവിടെ തീണ്ടൽപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ശപിച്ചതുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കുടത്തിൽ പുക്കുളിച്ചു എന്നവിടെ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ അശുദ്ധപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ കുടവുമായിട്ട് എൻ്റെ പേരും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലും പോയി എൻ്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് അന്നേക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വൃത്തി തരും. അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇത്ര പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതായ ആ വരത്തെയും കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പുള്ളുവ സമുദായം. അവരുടെ പാതുകാപ്പായി ബ്രഹ്മൻ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ, വീണ, കുടം, എളുത്താളം അവരുടെ ചൈതന്യ ശക്തികളാണ്
മന്ത്രോച്ചാരണത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് പിന്നെ പ്രാധാന്യം വീണ, കുടം, ഇളത്താളം ഈ ബ്രഹ്മൻ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ അവരുടെ ചൈതന്യ ശക്തികളാണെന്നാണ് പൂർവികന്മാർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളും ഈ കർമ്മങ്ങൾ മുന്നോട്ട്. ഞാൻ അല്പനേരം ഇത് പറയാം. In Kerala, the Sarpam Pattu and Sarpam Thullal ritual ceremony is celebrated, is performed entirely by the Puluva community people. This is related to a Tharavads, Nagancheri Tharavads, where a lady was said to have been got polluted, and she became a kind of beam. Chidalputtu, that is what they call it, and that lady gave a boon to the Puluva community people, saying that you people should move from house to house and speak about the values of this lady and collect alms from them, and that will be their livelihood they will collect. And secondly, he is telling, for these people, the three musical instruments, traditionally they should use only the veena, the kudam, and the ilathalam. Veena, that is the Puluva veena. This is a peculiar instrument used only by these Puluva community people. No other community people use this instrument. This is treated as a most sacred instrument in Kerala, and this is related to this Naga Kalampatu. And the other instrument is this is Kudam. This is known as Puluva Kudam. Again, this is the most sacred musical instruments used only by these Puluva community people. No other people use this kind of instruments. This is the second one, and third one is Ilathalam. This cymbals. This is mostly we are seen in many of the Kerala festivals along with drums. They used it to have these instruments. This is somewhat common. I have seen several other along with other musical instruments. But these two instruments, this veena and this Puluva Kudam, this is entirely related to these people, and only these people play these instruments. Yes, please. Silence, please. As a part of the celebrations of sacred groves in the country, Gutards have organized a sacred grove representing Central and South Kerala, mostly of the serpent called nature. This here we have installed the deities commonly found in this kind of cows. A Nagaraja representing the Ananta and Vasuki, and a Sarpayakshi is consorts, and the Naga Kanyaka. This is most commonly found in our South Kerala sacred groves. In Kerala, the people in general consider that the serpents are the custodian of the land. In order to appease them, they annually celebrate the Sarpa Pujas in the groves. There exists in the minds of the people that the serpent cows are so sacred that any violation of the plants grown in the cow will bestow them
disaster. So the biodiversity of the area is retained in this kind of groves. And, more than 10,000 groves are found in all over the state, in North Malabar and Malabar, mostly. Is it to be useful or not? I understand that the Manav Sangrahalaya was organized this Sacred Grove festival in order to revitalize the Sacred Grove tradition all over the country, and the biodiversity of our country has to be retained in various regions in situ. And this movement will help in that way, not only the ritual tradition but also the biodiversity conservation. This movement is going to serve the country. चक्रवर्ती साहब, ये जो सेक्रेड ग्रोव्स या पावन अरण्य करके जो आयोजन आपने किया है, इसके पीछे सोच क्या है? सोच ये है कि हमारे संग्रहालय केवल वस्तुओं के संग्रह के लिए नहीं है, बल्कि कुछ परंपराओं के संस्मरण के लिए है। तो हम लोग एक ऐसी परंपरा की संस्मरण करके उसको दोबारा निर्माण करने का, दोबारा जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ हमारे देश की जैविक एवं प्राकृतिक वैविध्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि देश भर में अनेक पुनीत वन हैं, देवराई, चाहे सारना हो, चाहे काबू हो, उनके मैनेजमेंट सिस्टम्स भी अलग अलग प्रकार के हैं। एवं वहाँ पे जो लोग देखभाल करते हैं, चाहे वो लिंगदो हो सिक्किम में, चाहे बिश्नोई लोग हों। अब बिश्नोई लोगों को ही देखिए, जैसे वो लोग खेजड़ी की रक्षा करते हैं, तो खेजड़ी लगभग 40 फीट नीचे तक जाता है और उसमें उसका जो व्यवहार का जो वैविध्य है वो भी अनोखा है। इस प्रकार पूरे देश में परंपरा बहुत सारी हैं जो धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट हो रही है, और नष्ट भ्रष्ट होने के साथ साथ हमारे देश की जो प्राकृतिक संपदा एवं वन है उसके भी नष्ट भ्रष्ट होने की खतरा कायम है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जो उत्सव कर रहे हैं इसके माध्यम से दूर दूर के जो समुदाय अभी भी इनसे जुड़े हुए हैं उनको हम एकत्रित करें, उनके आपस में वार्तालाप कराएं, फिर उनके साथ मिलकर मौके पर हम कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जिससे ये परंपरा पुष्ट हो एवं उन्हें हम फिर से जिंदा रख सकें। अब बिश्नोई जैसे लगभग 29 उनकी नीतियां हैं जो इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के साथ जुड़ी हुई है। ये पावन अरण्य जो किसी ज़माने में पावन अरण्य हुआ करते थे और जाहिर है कि विनाश के दौर में वो परंपराएं भी खत्म हो गई, लेकिन जब ये हुआ करते थे, जब अस्तित्व में थे या आज भी जहां अस्तित्व में हैं, तो उन समुदायों का क्या सोच था इसको प्रिजर्व रखने के पीछे? देखिए, जैसे हमारे पास में ही जैसे उज्जैन है, यहाँ महाकाल वन की बात होती है, आप कह रहे थे ना पुराने क्या होता है। फिर जैसे आनंद वन है, बनारस के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही श्री वन, तपोवन बहुत सारी है। लेकिन आज भी ये जो जैन मंदिर या बुद्धिस्ट चैत्य या जैसे साथरी है या बासदी है, उनके साथ यह परंपरा जुड़ी हुई है। एवं अभी जैसे सारना से सारुल नृत्य करने के लिए लोग आए हुए हैं, वहाँ पर तो इतना जिंदा परंपरा है कि वो लोगों ने सारना धर्म का इस्तेमाल करते हुए एक डैम को रोक लिया वहाँ पर बिहार में, एवं उसके माध्यम से इन लोगों के अपनी जो अस्मिता है उसको कायम रखे हुए हैं। ऐसे ही ये ट्रेडिशन जिंदा है, मरी हुई नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब पुनीत कहने से ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक दिन में सारे जंगल ही पुनीत था। हमारे प्रकृति के साथ संबंध जो है वो एक अटूट थी, अक्षुण थी। अब चूंकि हंटिंग गैदरिंग कल्चर समाप्त हो गया, एग्रीकल्चरल कल्चर आ गया है और साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो जंगल के साथ जिस प्रकार के आत्मीय संबंध था, मतलब मनुष्य का वन के प्रजातियों का, अन्य प्रजन्मों का जो आपस में संबंध था, वो खतरे में है। तो उसे बचाने के लिए हम लोग समुदायों के साथ जुड़ने के प्रयास करते हैं। मानव संग्रहालय में इस पुनीत वन का स्वरूप कैसा होगा? मानव संग्रहालय में ऑब्वियस है कि यहाँ पर पुनीत वन जो है ट्रांसजेनरेशनल ग्रोथ होता है, वो कोई बनाया नहीं जाता है, वो बनता है और सदियों से बनता है।
तो यहाँ पर हम लोग इतना ही कर रहे हैं कि वहाँ से जो सैपलिंग्स यहाँ पर जन ले सकते हैं या बढ़ सकते हैं, उन्हें उनके मदद से, समुदाय की मदद से लाके लगा रहे हैं। साथ ही उनकी जो देव देवताएं हैं, फोक डिटीज़ है, उनको यहाँ पर लगा रहे हैं। फिर साथ साथ उनके जैसे थय्यम नृत्य का जैसे हुआ कि उनकी देवता के साथ मनुष्य कैसे एकाकार हो जाता है जब पवित्र वन में आते हैं। तो उनका कहना है कि ये जो वन था ये पहले स्नेक गॉडेस के पास थे, तो अब हम लोग स्नेक्स जो है ये इसका एबोरिजिनल ओनर्स है, उनसे हमने चूंकि ज़मीन छीनी है तो इसलिए हमको उनको खुश करना जरूरी है। तो इसी तरह से हम लोग वन के जो रक्षक एवं धारक जो लोग संप्रदाय हैं या ये जो समुदाय हैं, उनके बारे में हमको सोच रखना चाहिए एवं उनकी मदद करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। आखिरी सवाल, यहाँ जो पुनीत वन आकार लेगा आने वाले कुछ सालों में, तो चूंकि समुदाय के बिना तो उस वन का भी कोई अर्थ नहीं है, तो क्या उन समुदायों से जुड़े हुए प्रतिनिधि भी यहाँ होंगे उसको जीवंतता प्रदान करने के लिए? संग्रहालय में तो समुदाय के प्रतिनिधि को अगर रखेंगे तो वो संग्रहालय में पुनीत वन का म्यूजियमाइजेशन हो जाएगा, अतः प्रतिनिधि भी एक म्यूजियम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का ऐसा इरादा नहीं है। यह एक केवल स्मरण के लिए, संस्मरण के लिए एक बैंक के रूप में है। ये मेमोरी बैंक है कि अगर आप भूल रहे हैं तो हम आपको याद दिलाएंगे, वी शैल जॉग योर मेमोरी। तो समुदाय के जो प्रतिनिधि है उनके साथ हमारा निरंतर संबंध बना रहता है। एक बार वो बनाते हैं, फिर उसके बाद आते रहते हैं हर साल वो आएंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको रिचुअल देखेंगे। जैसे हमारे मकान जो बनते हैं यहाँ पर, जो कुटियाँ बनते हैं, वो भी उसका हाउस वार्मिंग सेरेमनी होता है। तो इसी तरह से इसके साथ लोग जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जो इरादा है ना कि मतलब व्यक्तिगत ढंग से आप उसको करिए, सामूहिक ढंग से नहीं, तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए हम लोग उस कोशिश ही करते हैं कि एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस का है, उससे कोई देश का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार करते रहते हैं। हर चीज हम ऐसे ही बाहर से स्वीकार करते हैं, तो उसी में जम जाते हैं, विराग उत्पन्न हो जाएगा। ये भी वही है, उससे अलग नहीं है। क्या सेकंड ग्रुप की बात करें, हमें मालूम है कि क्या करें। बोलने से नाटक ही लगता है, जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए जैसे ये इस बार यह खाली एक्सपर्ट मीटिंग होना था, तो मैंने कहा कि सब एक्सपर्ट मीटिंग ठीक है, लेकिन हर बार हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे। तो आप लोग जैसे लोग हैं इसलिए, क्योंकि पॉलिटिक्स के अलावा भी आपके इंटरेस्ट है, ऐसे लोग हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं। अब कुछ डिपार्टमेंट है जो सचमुच काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बरसों की जो प्रैक्टिस बन गई है कि यार कैमरे के सामने होना चाहिए नहीं। अरे मेरे पास आया था विजिट करने के लिए, और नई छत डाली है उन्होंने। हाँ, तो नई छत नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें छत नहीं था उस तरह का। अच्छा। ऊपर में शिखर नहीं था। तो सब उसको पकड़ो यार।
देखा हूँ, देख के गया पूरा पिटूरा। बहुत मारता है। मेन कॉन्सेप्ट इज ग्रीनरी। हट तो एक बहाना है। बात हो रही कि अपनी तो किस्मत ही कुछ ऐसी थी। भैया पापा को बुला देना। भगवान तुम चलाओ। इस पेड़ पे मैं इतनी तेज चढ़ सकता हूँ। Yes, yes, sir. Yes, yes. Let it chill, let it. उस पहाड़ से इस पहाड़ का ले लो जैसा। हाँ पत्थर आएगा थोड़ा साइड में करना होगा। हाँ आपके स्कूटर में पेट्रोल ही कम है आपकी गाड़ी में। कितना था? कितना था? वन बोले? पेट्रोल डालवा दीजिए। गाड़ी थोड़ी अरे ले लो तो फ्रांस की पड़ी है, एक स्विट्जरलैंड की गाड़ी पड़ी है, जापानीज गाड़ी पड़ी है। सही बता रहा हूँ, ये प्लास्टिक वाली और सब बिल्कुल ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि इंडिया में खरीदी।
वहीं के आदमी से। रजवार हट के नीचे जो है